Very good evening to one and all. I am Dr. Mukesh Lechetiwar, working as an assistant professor at College of Agriculture, Parul University. So today we are going to start a very interactive and productive webinar on the basic attitudes to grow in the career. So for the today's webinar, our chairman for the today's webinar is our respected Dean Faculty of Agriculture and Principal College of Agriculture, Dr. Chandrakant Sharma sir. Welcome you sir. And today we have with us our guest speaker. He is the president working as the president at the Mankind Pharma, Dr. Birendra Singh sir. Welcome you sir. And he is a motivational leader setting strategies for the global quality operations, IT compliances, cultural transformations to achieve the compliance with the sustained growth and profitability, and building and mentoring the team to meet highest global standard. He was worked earlier with the Intas Pharmaceuticals as a group head in the quality and senior vice president in the corporate quality. And also he has worked with the Zydus Group as a cluster head, quality cluster head in quality. And also he has worked with the Pinac Biotech Limited as a vice president in the quality. So now I would like to invite our respected Dean sir. Please share your valuable thoughts to our audience, sir. Please, sir. Thank you very much, Dr. Mukesh. Very good afternoon to all. This is Professor Dr. Chandrakant Sharma, Dean, Faculty of Agriculture, Principal College of Agriculture, Parul University, Vadodara. At Parul University, we are catering the need of the society by imparting into the knowledge under the dynamic leadership of Honorable President, Professor Dr. Devanshu Patel sir. In the agriculture, we are offering the courses in the BSc Agriculture, BTech Dairy Technology, BTech Agriculture Engineering, BTech Food Technology, as well as in the case of the university. Being a teacher, we always think the holistic development of the student, which is very much essential. And in the holistic development, attitude of anyone gives a kind of different impact for the development of anyone. Today's topic, which will be, on that topic, which will be spoken by a very dynamic person who is the president of this Mankind Pharma, Dr. Viren Singh sir. I believe the topic which is chosen for today's talk is very much relevant. To grow in the career, our attitude plays the significant role. We are very much thankful. I'm very much thankful to Dr. Viren Singh sir, who has accepted our invitation, and we had a kind of queue, and we had a kind of earlier discussion to deliver the talk, but due to his busy schedule earlier, he went to UK, so we were waiting when he will come back. Then I think our students will get the benefit of that. So with these words, I would like to welcome you all to today's webinar, especially Dr. Viren Sharma for this webinar. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your thoughts. So now, moving towards our today's session webinar. So I would like to request Dr. Birendra Singh, sir. So please start with your presentation, sir. Thank you so much. Thank you, uh, Professor Sharma, Professor Mukesh. I'm privileged and honored. At least you have given me that opportunity to speak on this platform. I'm getting a lot of echo. You guys are getting something? There are two devices, I think, on somewhere. Okay. Yeah, it's now fine. It's fine now. Yeah. So, thank you so much. I when you talk about anything to the students, it's always privilege because they are new generations to grow in their life for the nations, everything, right? So I'm glad Mr. Sharma was in touch with me for last couple of months, and he said at least you interact with our students, right? So this is really
proud to me to have here to give my thoughts about student. It is always two-way learning kind of things. Whatever I learn, I need to share that to new generations, right? So this is way how we should work in the society. It's great things. I'll talk about something basic things how to grow in your careers. I'll not talk about your studies. I'll not talk about something your subjects. You are master on this. Your professors are very knowledgeable to talk about those subjects. I'll talk about the basics, how to grow, and what are the basic things to be maintained when you grow in your careers. Right, so the small things I'll try to cover up here. So I have PPT, so I'll not share that PPT. It's very small thing. So I'll talk by my own way now. Is it okay, Mr. Sharma? There is no problem, sir. Move ahead. Okay, okay. Because by sharing PPT, then I'll not able to see all of you. We That's are what. bonded with that. Yeah. That's what. So I Actually, it is live on the Facebook through the PU webinar. So okay. audience will be on the Facebook also. And nahi, what Yes, is please. it? Yeah, it's coming. Yeah, I So they will quote the questions on that. We will take the questions from them also. But the audience is on the Facebook, which is live. So it sure. is Okay. a kind of that arrangement. Okay, then what I'll do, I'll just share, and in between I'll drop it that PPT. No problem. Okay, for their point of view, I'll just try to share it. No problem. Whatever you feel easy. It's visible now. Can you confirm someone? Yes, sir. Yes, sir. Is it visible? Yeah, visible. Thank you so much. So, dear friends, dear students, just I'll start by small things like how before going into anything to talk about you, I'll just start with a small story, right? So you must have heard this, but for your refreshment kind of things, like when we start refresh ourselves, always our knowledge is regenerated. I would say the word is regenerated. Okay, I'll start with the story of crow. एक कौवा की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, राइट? हाउ दिस स्टोरी इज, एक साधु जा रहा था एक बार, देन उस रास्ते में उसको कौवा मिलता है, एंड कौवा जैसे कौवा उसको देखता है साधु को, तो कौवा उसको उसके ऊपर बोलने लगता है कि एंड मैं बहुत निराश हूँ अपनी जिंदगी से, एंड समथिंग इज नॉट हैपनिंग गुड टू माय लाइफ, राइट? तो साधु उसको बोलते हैं क्या हो गया? तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आप गॉड के मैसेंजर हो ना, तो मेरी लाइफ चेंज करो। आप साधु हो, गॉड के मैसेंजर हो, तो मेरी लाइफ चेंज करो। उन्होंने बोला ठीक है, चलो आपकी लाइफ चेंज, क्या क्या दुख है आपको बताओ। तो उसने बोला कि मैं अपने कलर से दुखी हूँ, मैं मेरा कलर जो है काला है, राइट, ब्लैक कलर है, एंड लोग मुझे श्राद्ध में बुलाते हैं, नो बडी रेस्पेक्ट्स मी, एंड ये कोई लाइफ नहीं है, ऑलवेज आई फील ह्यूमिलेटेड, मेरी ऑलवेज गिल्ट फील करता हूँ विद माय दिस लाइफ। उसने बोला क्या बनना चाहते हो? अच्छा, आप आपकी करंट लाइफ से गिल्ट फील करते हो, तो क्या बनना चाहते हो, राइट? तो उसने बोला मुझे हंस बनना है। तो साधु ने बोला ओके, आपको हंस बना देंगे, जस्ट गो एंड चेक विद हंस, एक बार हंस से आप मिल के आओ। तो बोला ठीक है, इतनी सी शर्त है, मैं जाता हूँ और हंस से मिल के आता हूँ। एंड वो हंस के पास जाता है और हंस को बोलता है, हंस यार क्या लाइफ है तेरी, वाइट कलर है, पानी में रहता है, लोग तेरे साथ फोटो खींचने को तैयार रहते हैं, तेरा क्या रेस्पेक्ट है इन लाइफ, एवरीबडी रेस्पेक्ट यू, आपको दूसरी नजर से, अच्छे नजर से सारे लोग देखते हैं, तो अपनी लाइफ से बहुत खुश होगा, एंड मुझे तेरा जैसा बनना है। तो हंस बोलता है कि किसने बोला तुझे कि मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ?
बोला तू खुश नहीं है तो क्यों, क्या क्या दुख है तुझे? बोलता है कोई कलर है वाइट कलर, और पानी में मेरी पूरी लाइफ बीत जाती है, कोई ये लाइफ है यार? बोला तू खुश नहीं है? बोला नहीं हूँ। तो बोला वो वापस साधु के पास दोनों लोग, दोनों चले जाते हैं। एंड दोनों साधु के पास जाते हैं, दोनों बोला नहीं हंस भी खुश नहीं है, मैं भी खुश नहीं हूँ आप अपनी लाइफ से, तो क्या बनना है? तो इन्होंने बोला कि मुझे पैरट बनना है। साधु ने बोला ठीक है आपको पैरट बनाते हैं, आप एक बार पैरट से मिल के आओ। दोनों लोग पैरट के पास मिलने जाते हैं, 2-3 चक्कर लगाते हैं पेड़ों के, मिलता नहीं, फिर बड़ी मुश्किल से इनको पैरट मिल जाता है। जैसे पैरट मिलता है तो पैरट को बोलते हैं पैरट भैया आपका आपका लाइफ कितना अच्छा है, इट्स ग्रेट लाइफ, और आपका कलर देखो, लोग आपको घरों में पालते हैं, मिट्ठू मिट्ठू बोलते हैं, आपके साथ बात करने का प्रैक्टिस करते हैं, क्या कितना रेस्पेक्ट है आपका लाइफ में। तो उसने बोला यार किसने बोला तुमको मैं अपने लाइफ से खुश हूँ? तो बोला तू भी खुश नहीं है? बोलता हाँ मैं भी खुश नहीं हूँ। क्यों, क्या क्या है, कोई कलर है? बोला तुमने 3 चक्कर तो पेड़ों के लगा लिए, कोई कलर? मैं जब ग्रीन में बैठता हूँ तो ग्रीन में ही मिल जाता हूँ, कोई मुझे पहचानता भी नहीं है, राइट? तो तीनों लोग वापस साधु के पास जाते हैं। साधु को बोलते हैं हम तीनों खुश नहीं है, तो क्या बनना चाहते हैं तीनों? उन्होंने बोला हमें मोर बनना है, पीकॉक बनना है। तो साधु की सेम शर्त अगेन, बोलता है ठीक है आप बन जाओगे तीनों, आप एक बार मिल के आओ मोर से। तो तीनों लोग मोर के पास मिलने जाते हैं, फिर मोर को बोलते हैं पीकॉक यार पीकॉक, तेरा क्या कलर है कि लोग तेरे साथ कैसे नाचता है, तेरा एल्बम लगता है, घरों में लोग तुझे सजाते हैं, तेरे पंख को घरों में सजाते हैं, क्या रिस्पेक्ट है, नेशनल बर्ड है, तो तेरी लाइफ तो बहुत सेटिस्फाइड है, राइट? यू everybody is happy with you, everybody is respecting you, your life is like anything, and even nationals is giving you big respect। तो उसको बोलते हैं, वो बोलता है कि तू तो अपनी लाइफ से खुश होगा, कौवा उसको बोलता है। बोला नहीं मैं खुश नहीं हूँ। अरे तू भी खुश नहीं है, क्यों खुश नहीं है? बोलता है यार ये कोई लाइफ है? अभी शिकारी आएंगे मेरे पंखों को नोच के ले जाएंगे, उसको अपना बिजनेस करना है, ये सारा कुछ है, एंड कब मेरी जान चले जाएगी वही पता नहीं है। तो बोला तू भी खुश नहीं है तो फिर खुश कौन है? तो पीकॉक बोलता है कौवे को कि तू खुश है सबसे ज्यादा। बोलता कैसे? बोला तूने कभी आ, सुना है कि मटर बिरयानी होती है? बोला है सुना है। तो कभी सुना है चिकन बिरयानी होती है? हाँ सुना है। कभी तूने सुना है कि कौवा बिरयानी होती है? बोला नहीं सुना है। एटलीस्ट तेरी लाइफ सेफ तो है, तुझे लोग मार के खाएंगे तो नहीं? द मैसेज इज don't compare your life to anyone in this universe. Everybody is unique. They are playing their roles, right? And you are unique creations of God. When you are unique creations of God, don't punish yourself by comparing with anyone in this universe, whosoever he is. Right? This is the message for all students, for me, for everyone in this world. So I have given you small example by saying this thing. Now, the second thing is time management, right? For students, always this is big challenge for time management. Everybody talks about time management, right? Even it's very big thing for human being, for everyone who they are success in their life. But especially when we talk about time management for students' life, when we were students, right? Every times we think about yeah, it's very difficult job, right? It's very difficult. The 24 hours are there, that is for everyone whosoever is living in this universe. The 24 hours a day for everyone. Now the best part is how we manage it, how everybody manages, whosoever they manage this 24-hour into different way, they are unique. I'll give you examples now how this is very possible, and how the importance we feel the importance of time management. How we know this, right?
So I'll stop sharing this. I'll talk that way only. One minute. I'll Yes, yes, no problem. So I'll stop sharing this. This is good visual. Otherwise, very difficult. Mr. Surya, it's difficult for me. This I'm not is seeing anything, right? this is the problem with the Google Meet actually. Yeah. This because in other your team and Zooms you can see everything, but Yes. in this way it's difficult. So I'll speak like this, right? I'll not give you visuals, but No I'll speak. problem. If you talk about time management, time management. So I'll give you a small examples for students. Don't think for short term. The moment you say short terms, we'll never utilize value our times. The moment you say this year I need to clear my first year, second year, third year, fourth year, we are thinking that much only, right? For the month, for the years maximum that we are thinking. How we get the importance of times when you correlate this time to your long term plans, right? I'll give you examples for easy understanding. Let's say today you have planned after 10 years. I'll correlate it with finance. If finance will give more clarity us into understanding the value of time. Let's say if you are targeting after 10 years, you wanted to have 2 lakh per month salary, right? So I'm giving you one figure, right? It could be 10 lakh, it could be 50,000. But 2 lakh per month salary is how much percentage that would be? Around 20-30%, not more than that. Whatever you are studying in your university throughout the nations, all the people, if I'm talking about. So out of you, 20% will be reaching to that target. I'm talking about 10 years, right? Not now. You'll go into stage wise, and someday can reach even 5 years, even 2 years, even 1 years. That is separate part. I'm talking about the common senses. Now you think, if you correlate your time with long-term plans, right? So 10 years. Let's say your per month salary, per annum salary. I'm simple giving you example, talking about per month salary, 2 lakhs, right? 2 lakh per month you divide into days. 25 days generally people stay work, right? In industry or any company. If you divide 2 lakhs into 25 days, this will comes how much? Approximately 8,000, right? 8,000 per day. And in a day, generally we work 8 hours, most probably 8 hours, right? Divide 8,000 into 8 hours. So in 1 hour, 1,000 rupees. Means if you are wasting your 1 hour for today, which is linked to your 5 year plans. If you are wasting your time today for 1 hour, you are tearing off 1,000 rupees. Simple way the formula correlate it. If you are wasting your 1 hours, you are tearing off, destroying 1,000 rupees. Now you say how that is. You are giving some of the examples, right? How you'll reach to 2 lakh rupees per month when you make yourself that much capable. How you'll make yourself capable? By valuing your time today. Like if you have 5 years plans, after 5 years I want to have this much salaries and this much amount, whatever you say. If you don't value your time today, now itself, what will happen? You cannot reach to 2 lakh because you have wasted thousand rupees. Think that you have wasted. If that knowledge you have not gained into whatever required for that hours, for that 8 hours, that is wasted, completely wasted. You have lost now. You cannot blame to anyone in this universe, right? So what generally we do, anybody, like always we blames others, right? We blames our parents, we blames the society, we blames our friends, we blames our colleagues, we sometimes we blames our professor also. I'm sorry to say, we say because they are not good teacher, good professors, so we are not able to read, we are not able to do good studies because
their way of style teaching style is not good. All these things are what they are. It's blame game. When we are blaming others for our lives, what it means, we are punishing ourselves. We'll never grow. We'll never success in our life. Whatever is happening to my life, I am responsible. Whether it's good, whether it's bad, anything happening to my life, it's I am responsible. And what happens, we think about our brains works like our like kids, kids, how kid behaves. If you say kids, you don't do this, if you instruct them, they will never allow you. They'll never agree with you. अगर उसको खिलौना तोड़ना होगा तो तोड़ ही देगा, आपका सुनेगा ही नहीं, अब कितना भी बोलो. एंड उसको कहीं जाना होगा बाहर खेलने, और जाएगा, बिकॉज ही इज नॉट लिसनिंग टू एनीवन. वो क्या ले रहा है, हाउ यू ट्रीट देम इमोशनली, how you can teach your brains by emotionals. It will be in your controls, right? I'll give you examples. कैसे बच्चे को हम कैसे बोलते हैं, how do you say कि यहाँ ये गेट से बाहर मत जाना, यहाँ बहुत बड़ा बाबा आ जाएगा, तुझे खा जाएगा, इतना दाढ़ी वाला आएगा. तो नाउ दैट इमोशनल इज देयर इन हिज माइंड. वो इमोशनल उसको वहां जाने नहीं दे रहा है अभी. इमोशनली ही इज ट्रेन्ड हिज माइंड नाउ, नहीं यहाँ जाएगा तो तू खा जाएगा. बट दैट व्हाट वी आर नॉट डूइंग इन आवर लाइफ. हम क्या करते हैं, अगर सपोज मुझे पढ़ाई करना है, राइट, सपोज वो ये तुमको दूसरा ही कुछ बोलेगा, ये नॉट से, वो बोला एंजॉय कर लाइफ यार, तेरी तो अभी लाइफ एंजॉय करने की है. You are now young, 18, 20 years. You are in youth stage. Why you want to read? Why you want to study? Like ये तुमको भटकाएगा दिमाग. ये तुमको different direction में ले जाएगा. You have to control this. You have to instruct this. कैसे इसको instruct करोगे? There are many ways. I'll give you some examples, right? आप practice करो. ये these everything is by practice. एंड ऐसा बोलते हैं कि गुड हैबिट्स जो मेहनत करनी पड़ती है ना, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग गुड हैबिट्स. एंड यू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, रिच इन योर लाइफ, बिकॉज ऑफ योर गुड हैबिट्स, नॉट बिकॉज ऑफ योर टारगेट. You do your good habits, you always practice, become your whatever you want it to be, right? Like सिंपल एग्जाम्पल है, मॉर्निंग वॉक बोलते हैं, इट्स गुड हैबिट, राइट. उसके लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, ब्रेन को बोलना पड़ेगा उठ के जाना है तुझे, तेरी बॉडी को ठीक करना है, राइट. देन यू हैव टू टेल योर ब्रेन्स, तुझे उठ के जाना है, 6 बजे जाना है, बाहर जा, वॉक कर 1 घंटा. बट क्या होगा, ये उल्टा बोलेगा तुमको, ये बोलेगा सो जा यार, आज संडे है ना, आज सैटरडे संडे हॉलीडे यार, कल तो तूने इतना पढ़ाई किया है, स्लीप, 12 बजे तक सोना बड़ा अच्छा लगेगा. What he is doing, वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है आपको, राइट. सो वी हैव टू बी, हाउ टू ट्रेन दिस, इसको इमोशनली आपको ट्रेन करना पड़ेगा. ब्रेन का क्या होता है, टेल यू, साइंटिफिक आई एम टॉकिंग अबाउट, साइंटिफिकली हाउ इट वर्क्स. इसको जो चीज आप पढ़ाते हो ना, जो चीज इसको सिखाते हो, इट वर्क्स लाइक दैट. वो वैसे आपके अंदर केमिकल सीक्रेट करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है. आप गुड डालोगे तो गुड होना शुरू हो जाएगा. वही आपको हमेशा प्रॉम्प्ट करेगा ऐसा करने को, गलत काम करने को. क्यों प्रॉम्प्ट करता है वो, बिकॉज दैट हैज, यू हैव गिवन दैट थॉट्स टू दिस माइंड. वो देने का ही नहीं उसको अपोजिट डायरेक्शन में, इसको कंट्रोल करने का. आई विल टेल यू हाउ टू कंट्रोल. एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. सपोज इफ यू आर लिविंग इन अपार्टमेंट्स और मे बी बंगलो, वेयरएवर इट इज, go in roof or in your बरामदा, वहां पे खड़े जाओ एंड इसको बोलोगे कि आज मैं स्ट्रेट देखूंगा फॉर हाफ एन आवर. मुझे स्ट्रेट देखना, ना इधर देखना है ना इधर देखना है, दोनों साइड कहीं नहीं देखना. आई विल सी स्ट्रेट करके देखना. ये तुमको स्ट्रेट देखने के लिए मना करेगा. ये बोलेगा नहीं नहीं, उधर से कोई आ रहा है, उधर देख, उधर से कोई आ रहा है, उधर देख, बिकॉज ही इज नॉट
coming into your controls. तो इसको तुमको कंट्रोल करना है फर्स्ट. When you start controlling, नहीं तुझे मैं नहीं करने दूंगा ऐसा काम. Then when you start controlling your minds, your brains, it will come in your controls. ये तुम जैसा बोलोगे ना वैसा करने लगेगा. But we don't do that, right? क्यों होता है ऐसा पता है? There are 3 choices in our life why this is happening. Fear of failures. कुछ भी काम करेंगे हम जिंदगी में, anything you talk about, any work, small thing, big thing, anything, first हमारे माइंड में always this tells us फेल हो जाएगा. तुझे फेल होने के पूरे चांसेस हैं. Always you will start by that failures, right? That fear will start in your mind. सेकंड क्या होता है? ग्रीड. बहुत ज्यादा ग्रीड होगा हमको, यार ये मिलता तो ऐसा होता, वो मिलता तो ऐसा होता. एंड दोनों से you cannot win your life. Both the things are very wrong. How you can win your life, how you can success in your life, not from failures, not neither from greed. कैसे हो गए? From learning. Whatever you do, it's learning process for your entire life. Entire life I'm talking about, till we die from this universe. It's learning. The day we stop learning, we die. Then we'll go into both the stages, either in fear or in greed. That's all. The simple step is always try to learn. And if you try to learn, you create your value. Right? How you create your values? Like I was talking about, you 20-30% only they are earning higher salaries. If you talk about whole world, not only in India or one company, even in your university, only 10% people they are taking higher salaries. Other 90% they are taking average or below average salary, I would say. Wherever you go, this is universal law. Sorry, I was in Harvard. I did some management course from Harvard University. So these are the case studies. I'm just referring to them. So these are studies what is happened globally, and this is truth. And what it says, why these 10% are getting higher salaries, as I mentioned. If you don't create your value, you will be in 90%. If you create your values, you will be in 10%. Now you say, साहब कैसे करेंगे? How we is कैसे 10% value बनाएंगे? Everybody is doing like this, right? I'll give you simple examples. Like in one class or one sections, let's say 50 students are there. Out of 50 students, 10 students who they are not by, I'm not talking about how they are grasping powers, how intelligence, how good reading there, how they do good studies. I'm talking about these 10 students are doing different than your 40 students. What different they are doing? Their style of reading or their different skill of reading is different than 40. How that is? Let's say if in a year 365 days, right? If you remove 365 days, 52 Sundays, holidays, everything, 250, 260 days if you talk about. Right now, offline started. Last 2 years it was online. So in 250 days, they don't waste time. They have timetables, right? In 24 hours, they will say this much time I'll give to my body, this much time I'll give to my intellect, this much time I'll give to my emotions. 3 things are there to create you for creating your value. The 3 things. What the 3 things are there? One is, the first thing is always how you read. Only the reading. The people who are in 10%, they only read than other 90 people. Right? So always focus on reading. Only not your subject. Other than your subject, you can read something, anything you read, right? Finance, stock market,
something other stories, something other books, anything. If daily half an hour you read other than your subjects, in 250 days, how much knowledge you gain than your other colleagues? Think about. Only half an hour you are reading some other subject, some other knowledge, some other skills, right? So you're gaining different knowledge. Automatically, you will become different personality. It's only basic, nothing, rocket science into that, who they are created, history, who they are into top levels. That's only, right? आपने you must have seen Eagle, right? ईगल का स्टोरी यू मस्ट हैव सीन कि तो बहुतों को पता लगा, आपको सुना होगा या नहीं भी सुना होगा। आई टेल यू, ईगल क्या होता है। ईगल लिव्स 90 इयर्स, 90 इयर्स। और इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। आफ्टर 45 इयर्स उसके विंग्स, उसकी चोंच और उसके नाखून वीक हो जाते हैं। वो हंट नहीं कर सकता, फिर खाएगा क्या, जिएगा कैसे। क्या करता है ईगल, 45 इयर्स के बाद वो हिमालय में चले जाता है। एंड जब हिमालय में जाता है तो क्या करता है, अपने चोंच को मारता है, पत्थर पे मारता है स्टोन पे, और चोंच को पूरा तोड़ देता है। उसके बाद अपने जो नाखून होते हैं उसको पूरा रफ करता है पत्थर पे, पूरा उनको भी तोड़ देता है। देन उसका नया चोंच और नए नाखून आने शुरू होते हैं। अब जैसे नया नाखून नए चोंच आते हैं, फिर वो क्या करता है, भी उसके विंग्स सब जैम हो गए हैं, बिकॉज ऑफ उड़ा ही नहीं है। एक एक विंग्स को अपने चोंच से निकालता है, नाखून से निकालता है। सोचो कितना पेनफुल प्रोसेस होगा ये। एंड जब ये पूरे नए पंख आ जाते हैं, देन अगेन लिव्स फॉर 45 इयर्स। 90 इयर्स मजे से जीता है, पता है। बट उसका बीच में ट्विस्ट आता है। तो एवरीवन हैज स्ट्रगल इन देयर लाइफ। कोई ऐसा बोलता है कि what happens actually, we always compare ourselves with some successful peoples, right? Always we compare कि यार उसका इतना सैलरी है, ये पोजीशन है, ये ले रहा है, ये कमा रहा है, राइट? We never see how he reached there, क्योंकि वो प्रोसेस हमने कभी देखा ही नहीं है। We always see from outside him, right? From inside what he did, nobody knows. And इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा पाप करते हैं, we punish ourselves। जब कंपेयर करते हैं तो हम अपने आप को फिर जलाते हैं, एंड अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं। वी फील गिल्टी कि यार हमने लाइफ में कुछ नहीं किया, बिकॉज व्हाट यू आर कंपेयरिंग योर टुडे टू 20 इयर्स सक्सेसफुल पर्सन। इन 20 इयर्स जर्नी व्हाट ही डिड यू डोंट नो, राइट? द मोमेंट यू नो हिज प्रोसेस, हाउ ही रीच देयर, then you will realize it's very tough process, painful process. The moment I just explained about eagle stories, right? ऐसा होता है। क्या होता है, टेल यू, कंफर्ट जोन बोलते हैं ना, वी ऑल हियर दिस वर्ड। जैसे आप पारुल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, स्टूडेंट मस्ट हैव कम फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट प्लेसेस टू स्टडी इन दिस यूनिवर्सिटी, राइट? And sometimes in career we need to move from this place to other places. But क्या होता है कि when we live with our family, सबके साथ हम जब साथ में रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, अच्छा अपने घर पे रहते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मम्मी खाना बना के दे रही है, everything is good, right, in our life. And then the moment we are comfort, then क्या होगा, हम then we are losing something for our life. मेढक की स्टोरी बताता हूँ मैं, इजीली समझ आएगा। मेढक क्या करता है पता है? मेढक को आप एक पॉट में डाल दो, एंड देन यू स्टार्ट हीटिंग दैट पॉट। पानी डाल दो उसमें, धीरे 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 वार्म करो, स्लोली स्लोली। एंड पानी जैसे वार्म हो रहा होता है ना, तो मेढक क्या करता है, फ्रॉग अपने आप को उस टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करते रहता है, एडजस्ट करता है। आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। जैसे उसके पास अभी भी बाहर जंप मारने की पूरी ताकत है, फ्रॉग कैन जंप एनी टाइम एंड गो आउट, बट नहीं करता। वो क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है। एंड जैसे टेम्परेचर 80 डिग्री के ऊपर हो जाता है, नाउ उसको टॉलरेट नहीं होता है, देन इज फ्रॉग स्टार्ट जंपिंग, बट उसके पास एनर्जी नहीं होता, देन डाई।
So that says comfort zone is very, very bad, I tell you. We always feel very, feel flourished when we stay with our parents. It's good, it's not bad. But if you wanted to grow in your life, take the opportunity wherever it is. UK, US, जम्मू कश्मीर, नीचे तमिलनाडु, कहाँ पे भी मिलता है, मूव इट फ्रॉम योर प्लेस. डोंट स्टे इन बड़ौदा, राइट? बड़ौदा में रह के जॉब करना है, इट्स नॉट दैट. गो एनीवेयर, टेक एक्सपीरियंस, यू लिव योर लाइफ. आप देखो, अगर आप, इफ आई गिव यू एग्जांपल, जो पैरट होता है, पैरट को घर पे पिंजरे में पाल दो, लाइक पिंजरे में डाल दो पैरट को, एंड पैरट का कितना अच्छा लाइफ है अंदर. देखो क्या लाइफ है उसका. बिल्ली नहीं खा सकता उसको. देखो किससे थ्रेट है? कैट से थ्रेट है. तो कैट उसको टच नहीं कर सकता, पिंजरे के अंदर जा नहीं पाएगा. खाना उसको 2 वक्त की चाहिए हो तो तुम खिला देते हो. जो जिसने पाला होता है वो खिलाता है, बढ़िया अच्छा अच्छा फ्रूट्स लेके आता है, बात करता है उसके साथ, वो भी बात करने लगता है, राइट? बट वो लाइफ इज, पैरट इज सेफ. अभी उसको कोई 2 वक्त की खाना मिल रहा है, लाइफ सेफ है, सिक्योर है, कोई जान का खतरा नहीं है, तो क्या चाहिए इससे ज्यादा, राइट? बट अगर वही पैरट आसमान में उड़ता, दूसरा एक्सपीरियंस लेता लाइफ में, 10 साल ही जीता 20 साल के बजाय, तो क्या डिफरेंट एक्सपीरियंस करता लाइफ का. आई एम जस्ट कोटिंग यू द कंफर्ट जोन वर्सेज योर चेरिश लाइफ. तो वैसा लाइफ, don't think, don't hesitate, don't be in fears to take risk. ठीक है? हमेशा लोग this is think that all life itself is risk. हमको पता नहीं है कि शाम को सोएंगे तो सुबह उठेंगे. anybody knows? किसी को पता है मैं सुबह उठूंगा? बताओ. सो के नींद आने के बाद किसी को पता है कि मैं उठूंगा कि नहीं उठूंगा? nobody knows. So we are already in risk. Our body is in risk. Then why you have that fears in minds to take risk? यार कुछ क्या हो जाएगा बताओ ना. In this life, मौत से बड़ा कुछ फियर है क्या? The biggest fear in life is क्या हो जाएगा? मर जाएंगे ना लाइफ में. इससे बड़ा रिस्क क्या है? नहीं, कुछ नहीं है, राइट? जिस दिन तुमने ये फियर जीत लिया, you will win in, you will like enjoy this life. जितना दिन भी जिएंगे ना, जो मैं पैरेट का स्टोरी आपको बता रहा था, it's like anything. एंड जब आपके दिमाग से फियर निकल जाता है ना, एंड यू बिकम डिफरेंट पर्सनालिटी. आई टेल यू, डिफरेंट पर्सनालिटी. एंड तुमको जब फियर नहीं होता है, देन अभी आपको मैक्सिमम फियर क्या होगा? अभी शॉर्ट टर्म सोच रहे हो आप, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, अच्छा परसेंटेज है, टॉप करूं, नहीं कर पाऊंगा तो घर वाले ये सब बोलेंगे, ये करेंगे, राइट? एंड जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सब फियर चल रहा है माइंड में, अननेसेसरी फियर चल रहा है. इंस्टेड दैट क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए. जो मुझे दिया है आज के दिन में, मैं स्टडी करूँ. मेरा काम क्या है? अभी स्टडी करना है. करना स्टडी. डोंट थिंक अबाउट 95%. डोंट थिंक अबाउट टॉपर ऑफ यूनिवर्सिटी. इन दिस प्रोसेस, इफ यू गेट दैट नॉलेज, यू विल बिकम दैट, राइट? आप लोगों ने विलिमा रुडोल्फ का नाम सुना होगा, राइट? विलिमा रुडोल्फ, गूगल कर लेना. विलिमा रुडोल्फ क्या थी? विलिमा रुडोल्फ ने क्या किया कि इन 15 years उसको पोलियो हो गया था. पोलियो. एंड शी बॉर्न इन ए रिच फैमिली, बहुत रिच फैमिली में बॉर्न हुई. एंड जैसे पोलियो हुआ, अभी रिच फैमिली में पैदा हुई है, तो सब लोग उसको, डॉक्टर्स, दुनिया के जितने अच्छे डॉक्टर थे सबको दिखाया. एंड एवरीबडी सेड शी विल नेवर वॉक अगेन. इसको जिंदगी भर अभी व्हील चेयर में बिताना है. एवरीबडी सेड दिस. हम लोगों को ऐसा बोल दिया था, तो हम क्या करते हैं? लाओ भाई सुसाइड कर लेते हैं, हमारी लाइफ तो खत्म होगी, पेरेंट के ऊपर क्यों बोझ बनना है, अभी मर जाते हैं. ठीक है? फर्स्ट थिंग ऐसा आता है. और उसकी मम्मी ने उसको ऐसा बोला कि इफ यू वांट यू कैन वॉक अगेन, इफ यू वांट. तो वो पॉइंट से ना उसके अंदर एक आस जगी. अभी तक सबने उसको होपलेस कर दिया था, सारे डॉक्टरों ने बोल दिया था यू विल नेवर वॉक अगेन, तो खत्म हो गया लाइफ. अभी डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं, दुनिया के अच्छे डॉक्टर बोल रहे हैं. तो उसकी मम्मी ने बोला इफ यू वांट यू कैन वॉक अगेन. तो उसने अपनी मम्मी की बात सुनी
और दिमाग में बिठा लिया कि मम्मी ने ऐसा बोला है तो इट मीन समथिंग आई कैन डू, करते हूँ। एंड स्लोली स्लोली उसकी मम्मी ने उसको सपोर्ट किया एंड शी स्टार्टेड, धीरे धीरे वॉक करना शुरू किया, धीरे धीरे। एंड व्हाट शी डज पता है आपको? 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल रेस में लिए। बताओ, जिस बंदे को, विल्मा को ऐसा बोल दिया था यू विल नेवर वॉक अगेन, उसने दुनिया को ये दिखा दिया 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल। पाँव पाँव से जीता जाता है ना रेस। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, if you think you can do anything, I tell you, especially I'm telling you students को, you are very very powerful at, I'm telling you, only think into the right directions. अभी आपका एज ऐसा होता है, इन दिस एज आता है, दिस इज एज फैक्टर। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं आता है। अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बाहर मजे करना है, राइट, पब जाना है, ये जाना, ऑल दिस कम्स इनटू इन आवर माइंड्स एंड दिस टाइम्स वी ऑलवेज गो इनटू डिस्ट्रक्टिव माइंड। इसमें हमने अपने माइंड्स को कंट्रोल करना है। Enjoy with your, I'm not saying not to enjoy your life, enjoy with friends, go everywhere, enjoy life, but in the same times make that habits to think long term, not short term. The moment you start thinking about long term to correlate your career 10 years down the line, like then you'll create your goals and something like this. ऐसा बोलते हैं कि 90% people are failed because, not because of they have not achieved their goal. They failed because they have targeted very small goal and achieved it. उन्होंने इतना छोटा गोल लाइफ में बनाया और अचीव कर लिया, एंड बिकॉज दैट वाज द रीजन फॉर देयर फेलियर्स, नॉट इफ दे हैव क्रिएटेड बिग गोल्स एंड नॉट अचीव फॉर दैट। ये 10% और 90% का जो मैं आपको रेशियो बता रहा था ना, दिस इज नोन फैक्ट। ऐसा बोलते हैं पूरा दुनिया, जो 10% के पास सबसे ज्यादा दौलत है दुनिया में, पूरा दुनिया में इंक्लूडिंग एवरीवेयर, अगर वो 10% दौलत इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए अमंग अस, एवरीवन इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, टू एवरीवन, राइट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, इन 2 years that money will go back to them only, जहां से वो निकल के आई थी। See, they knows how to earn, how to continue to earn the money. हमें नहीं पता है, because they have earned that knowledge, right? So this is what I am talking about. हमें कुछ मिल भी जाएगा ना फ्री में, if that capability or knowledge we don't have, we not able to, spend that into good things, right? So ये मोटा मोटा things I tell you, and टाइम का कितना बड़ा वैल्यू है इन योर लाइफ, आई टेल यू। वो बिल गेट्स को बोलते हैं ना, अगर उसने कुछ पैसा गिरा, अगर उसने झुक के उठाया ना वो पैसा, तो आई थिंक जो उसका टाइम झुकने में लगा ना, उससे ज्यादा तो आई थिंक वो पैसे का वैल्यू नहीं है। थिंक 2000 का नोट अगर नीचे गिरा, 2000 नहीं 7000, कुछ ऐसा कैलकुलेशन में आया, 7000 रुपये वो उठाने में जितना टाइम खर्चा करेगा, उससे ज्यादा तो उसका टाइम खर्चा हो गया। थिंक दैट the time correlations I'm talking about with this, right? These are the basic thing for all the students. I tried to explain you something, right, beyond your study, beyond your other things, to motivate you. I know it's difficult for all of you to implement everything, I know, but at least if you start focusing small thing in your life, you will become one day very very successful persons, I'm sure. And whosoever they are successful, whosoever they are in tops, they have not done anything unique, only they did practice, they make habits, and that good habits make them successful. That is the only funda, nothing more than this, right? So Mr. Mukesh and Mr. Sharma, if I can take their questions, right, I should give them some chance to uh, ask some of the questions. Otherwise, what will happen? I only speaks and I will not listen their questions.
Dr. Mukesh, do you have some questions? Otherwise, I'm having some questions from the audience also. Dr. Mukesh? So the question is how we can implement such good things in the life, because the student says we know so many good things, but implementing the good things is not the easy task. And I think being a teacher, we can understand. It's a kind of Herculean task for them. Suppose to early to rise, early to bed. Even they are not able to follow such simple funda of the life, we can say that. So how the students should think about that? मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, राइट. It's other than philosophy, it's something very simple thing. My father, mother, both were professor in Kumavi University. Now they retired, and I learned a lot of things from them. What this is, and I did this. I'll give you example, my own examples, so you'll understand properly. When you start making good habit, it's not easy, right? It's not like Sarma ji ne bola, Professor Sarma ne bola ki it's not easy to implement. I agree, it's not easy to implement. How you do that? Do self punishment. How the self punishments? Now I'll give you example. You correlate for other money things, right? मेरे फादर मुझे बोलते थे कि सुबह ना 4:30-5 बजे उठने का, एंड यू रीड स्टडी आफ्टर वेक अप 5 o'clock, देन यू स्टडी, एंड आपका माइंड अच्छा काम चला. 2 घंटा जितना पढ़ोगे ना, रात का 4 घंटा पढ़ने में उतना बेनिफिट नहीं होगा. तो हमें समझ नहीं आता था. तो थोड़े पापा ऐसा मत बोलो, क्या सुबह उठा नहीं जाता सुबह. एंड वो बोले तू करके देख. नहीं होता. शाम को 11, 12, 1 बजे तक भी पढ़ लो, बट सुबह हम 5 बजे नहीं उठ पाएंगे. चाहिए. बोला शाम को आप 10, 11 इतने बजे सो जाओ, एंड सुबह 5 बजे उठने का हैबिट डालो. बोला कैसे पॉसिबल है? बोला मैं बताता हूँ आपको. एंड उन्होंने मुझे हॉस्टल में डाला था. दो आई वॉज स्टेइंग इन नैनीताल, बट उन्होंने मुझे, मम्मी पापा ने दोनों ने घर से निकाल के हॉस्टल में डाल दिया था. यू लिव डिफरेंट लाइफ, हमारे साथ मत रहा. एंड मुझे कुछ स्पेशल अमाउंट देते थे मंथ का. इतना रुपया तुझे मंथ का मिलेगा, यू हैव टू मैनेज. इतना तुझे मेस का फीस देना है, इतना तेरा कॉलेज का फीस, एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज. यू विल नॉट कम बैक टू अस बिफोर मंथ एंड, राइट, अनलेस एनी इमरजेंसी हैपेंस. तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि 4:30 बजे का अलार्म लगा और नहीं उठ पाएगा ना, तो पनिश योरसेल्फ एंड 50 रुपए का नोट फाड़ देना. मैं बोला क्या बोल रहे हो आप? तब 50 रुपए बोला तो बहुत होता था. आई टेल यू, बहुत होता था. 96 में, 97 में, आई टेल यू, हमें कुछ 900 रुपया कुछ मिलता था. मुझे याद है पूरा मंथ चलता था 900 में. हॉस्टल का फीस, कॉलेज का फीस, उसके बाद भी बचते थे, कपड़े भी ले सकते थे. आई रिमेम्बर दैट. तो बोले 50 रुपए तो फाड़ देना, लिटरली आई एम टेलिंग यू. मेरे पापा क्या बोल रहे हो? बोला मैं बोल रहा हूँ तू फाड़ देना. अब पापा का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं उनको मना नहीं कर सकता. बोला तू 4:30 बजे का करना, अगर नहीं उठेगा ना तो तू उसको फाड़ देना. मैंने 4:30 बजे का अलार्म लगाया, एंड जैसे अलार्म बजा, हाथ गया, बंद हो गया. 50 रुपये रखा था, एंड लिटरली आज मैंने फाड़ दिया. पापा ने मुझे सिर्फ ये पूछा कि उठा, नहीं पूछा, ऐसा नहीं पूछा. 50 रुपये का नोट फाड़ा ना? मैंने हाँ फाड़ दिया. उनको पता था नहीं उठेगा, एंड बोला कल सुबह भी ऐसा ही करना. बोला नहीं, कल उठ जाऊंगा मैं. नहीं, तो 50 रुपए का नोट जरूर फाड़ना. एंड ये ध्यान में रखना, आई विल नॉट गिव यू एनी मनी. जितना भी पैसा बचेगा ना, उसमें तुझे पूरा मंथ चलाना है, ये ख्याल रखना. एंड देन नेक्स्ट डे मैंने बोला कैसे भी उठूंगा यार, ऐसा तो नहीं फाड़ूंगा. एंड जैसे 4:30 बजे अलार्म बजा ना, तो हाथ रख दिया. मैं बोला उठ जाऊंगा. उठ गया, फिर सो गया. एंड 4:30 की बजाय 4:35 में उठा. राइट, 4:35 में उठा. अभी 4:35 तो रूल्स हैं. फिर 50 रुपए का नोट मैंने फाड़ दिया. एंड पापा का फोन आया. पापा सेड कि
फाड़ा ना 50 रुपए का नोट? मैं बोला हाँ, फाड़ दिया। एंड बोला कल भी ऐसा करना। अभी अभी जब मैं शाम को सोने गया ना, मेरे दिमाग में ये फियर था, अगर मैं कल सुबह नहीं उठा तो मेरा पूरा मंथ चलाना मुश्किल हो जाएगा ये पैसे से। अब मैं किसको मांगूंगा? एंड फादर ने बोला कि कुछ नहीं मिलेगा, इसी में मैनेज करना है, राइट। एंड 50 रुपए का नोट फाड़ दिया। बिफोर अलार्म बजने से पहले मेरी नींद खुल गई। एंड बिस्तर से उठ गया, वॉशरूम गया, सब कुछ ठीक ठाक किया, 50 रुपए अंदर डाल। एंड लिटरली आई टेल यू, फादर ने मुझे ऐसा बोला कि आज तूने 50 रुपए का नोट नहीं फाड़ा होगा। ही सेड दिस वर्डिंग। उन्होंने ये नहीं बोला तू उठ गया होगा, आज तूने 50 का नोट नहीं फाड़ा होगा। हाँ पापा, मैं उठ गया था, आज उठ गया था। बोला अभी एक 50 का और नोट फाड़ता ना, कि तेरा बाप भी 4 बजे उठता, ऐसा बोला उन्होंने मुझे। सो दैट्स व्हाट इज द पनिशमेंट। लिटरली इफ यू डू दैट, तुमको हर्ट होगा, अंदर से पता लगेगा, योर माइंड विल नॉट अलाउ यू टू डू दैट। तो ऐसे हैबिट बनते हैं। आई टेल यू, आफ्टर दैट आई टेल यू, कभी मैं 4:30 या 4 बजे उठ जाता था। दैट्स व्हाट इज सेल्फ पनिशमेंट। करोगे ना, you'll make your good habits, you can implement anything in your life. That's what I try to correlate, Sharma ji. Very It's, true. And the yes, classic example that I came to that you belongs to Nainital. It's a fabulous yeah, place, you know. yeah, Beauty. it's a place to live. Now this query, and I should say, that's a kind of words I can say, being a teacher. Sometimes what happens, we give a kind of good learning to the students, as we have discussed a lot in today's session. In collective sense, I say, because teachers are the makers of the society. Yes, We make the society. And we give a kind of good things to the students for changing such. But it's a kind of the, impact of the society, as you have quoted. The mind will divert the students to go to the party to enjoy the life, because this is not the life we have to. This life is passing. Ultimately, this is not the purpose of this time. We will study later on. So there are so many things. It happens. And there is a condition, if you compare regarding the sincerity, which is deteriorating nowadays. It is happening. If you see in the society among the students, it is deteriorating. But on the other hand, by using the gadgets, whatever are available in the present era, these are supporting them for equipping in different sense. So there are some pros and cons of the present technological era, whatever we are visualizing. So, as you have discussed, sometimes just I'm quoting, I'm adding, students also understand the teachers are motivating them. They are like as a parent also for their development. I think that kind of feeling should be in the students. That is my perception regarding that. Dr. Mukesh, please carry on. Yes, sir. Uh, One question from the audience, sir. Which are the basic attitude required that while working in the industries? Yeah, see, in not only in industry, I tell you, in your life, when the basic things, always you have to be very, very transparent and truth, and you focus on your job. Forget about what the other peoples are doing, right? So always what we focus, what others are doing. तुम पूरा दुनिया को चेंज करने जाओगे तो you cannot do that. So your focus is wrong. You change yourself. You always think about your target, your goal target, whether you are, see, आपको इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स होगा, बाहर भी होगा, एवरीवेयर, लाइक, सो ये ह्यूमन साइकोलॉजी के, इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, यू कैन नॉट रूल आउट दिस। आप एक घर में देखो, आप भाई बहन या हमारी वाइफ्स, एक फैमिली बनता है, जॉइंट फैमिली, वहां पे पॉलिटिक्स होता है। थिंक दैट, forget about such a big industry, nation, college, schools, everywhere. It's human psychology. You cannot escape from this. How you can differentiate yourself from that kind of activities? You just focus on your goal, forget about other things. Then only you can,
achieve whatever you wanted to achieve. If you try to divert yourself into in that, you are also same body, right? Then you are also doing same thing what others are doing. Then you don't blame others. What I was talking about, you don't blame others. Then you are also same body. Yes. Thank you very much, sir. And one more question is how to manage the stress in the life. Yeah, it's very very important things I tell you. This is even for everyone, even from students, from me, from everyone. Like, how this stress comes, right, in our life. I said it comes from fear always. Always it comes from fear, and the fears could be money ways, right? It could be I'll not able to achieve if will be there. It's not you will not achieve. If I can't achieve that, what will happen? If I don't do that, what will happen? And young generations में क्या होता है? ब्रेकअप, रिलेशनशिप ब्रेकअप, राइट? वहां पे ब्रेकअप, दिस इज ट्रूथ. अभी ब्रेकअप होता तो इतना स्ट्रेस में आता है, दे गो फॉर सुसाइड्स. बट दे आर नॉट एबल. इट्स डिफिकल्ट, आई टेल यू, इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल दैट सिचुएशन बाय speaking or by experiencing that kind of situation. It's required a lot of controls on your mind. Anything in our life, three things are working. One is body, one is our intellect, third is emotions. Three things are driving our careers, our life, right? Three things, always three things. If any one is weak out of two, we will not able to success in our life, in our personal life, in our careers, everywhere. बॉडी, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बॉडी मीन्स बॉडी का ख्याल कैसे करोगे आप? सो के होने वाला है बॉडी. अच्छा, बॉडी नीड एक्सरसाइज, राइट? खूब स्वेटिंग करो बाहर. ऐसा नहीं कि आप बरामदा में वॉक करके आ जाओ एंड बोला यार आज तो अभी अच्छा खाएंगे भाई, वॉक किया है. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, स्लोली स्लोली, राइट? देन बॉडी डिमांड्स, आप बॉडी में वॉक करो एंड खूब एक्सरसाइज करो, तो आप घूमोगे ना, उसके बाद अच्छा लगेगा. सेकेंड इज इंटेलेक्ट एंड इमोशंस, इट वर्क्स टुगेदर. आपके पास अगर कुछ प्लान है, इमोशंस है, लाइक द इंटेलेक्ट है कि ये मुझे करना है. इफ यू डोंट हैव इमोशंस, यू डोंट अटैच विद इमोशंस, देन इट विल अगेन फेल्स. इमोशंस मीन एनर्जी विद मोशंस, राइट? एनर्जी विद मोशन इज इमोशंस. तभी आप मूव होगे जब एनर्जी आएगी. हाउ एनर्जी विल कम? फ्रॉम बॉडी. So all these three things works for our life, but it require lot of practice. मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ. मेडिटेशन हम बात करते हैं, बहुत दूर की बात है. पहले सिंपल आप अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू करो. स्ट्रेस विल गो अवे. फियर निकालो एंड माइंड को कंट्रोल करना शुरू करो. एक एग्जांपल देता हूँ. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर ड्राइविंग कार, राइट? तुम बहुत लोग कार ड्राइव करते होंगे, स्टूडेंट कोई कर रहे होंगे, कोई नहीं भी करते, या चलो बाइक तब भी कर रहे हो. जिस दिन फर्स्ट दिन आप ड्राइविंग सीट में बैठते हो, क्या आता है माइंड में? फर्स्ट दिन ड्राइवर बोलता है बैठ, चला गाड़ी, डाल गियर. क्या आता है माइंड में? आई विल हिट द कार, आई विल हिट द कार. फर्स्ट ही आता है, ठोक दूंगा मैं गाड़ी. क्यों आता है ऐसा माइंड में? व्हाई इट्स कमिंग? बिकॉज आई डोंट हैव एक्सपीरियंस. आई एम एक्सपीरियंसिंग फियर इन माई माइंड. मुझे फियर है क्योंकि अननोन है वो. आई एम नॉट नोइंग दैट थिंग, राइट? मुझे क्या लगेगा, मैं उसको अभी गाड़ी में हिट ही कर दूंगा यार, कोई सहारा दे मुझे, राइट? एंड आफ्टर 1 year ऑफ ड्राइविंग, आप हाईवे में चलाते हो, आपकी गाड़ी इतने स्पीड में निकलते हैं आजू बाजू से, कभी दिमाग में आता है कि मैं गाड़ी हिट करने वाला हूँ या कोई मुझे हिट करेगा? आता है कभी? माइंड में आता ही नहीं है. व्हाई इट्स नॉट कमिंग? व्हाई दैट फियर इज नॉट इन योर माइंड नाउ? यू आर एक्सपीरियंस, यू आर एक्सपर्ट. आपने दिमाग को ऐसा बोल दिया है कि कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, आई विल कंट्रोल इट. किसको, किसने बोला है ये भी? अभी आप आदमी वही हो, ब्रेन वही है, राइट? पर्सन इज सेम. नाउ व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट थिंग जिसमें आपके पास है. इसलिए what the main thing is, learn it and remove your fear. You can remove your fear only by learning. No other meditation is there in this universe. I am telling you, whatever perfect you are in any subjects, you will remove your fear. आ जाए, fear हट जाएगा आपका 100%.
It's Yes. very true because I have experienced this with some of my team members. Earlier, they had a kind of fear to do Yeah, something which is different. We were yeah, planning to have some kind of new, initiative in our college. One of my colleagues told, "How sir it will possible?" And I think they can recall the words which I have quoted. It's very much true. We have to come out from such kind of fear to do something absolutely. good. Yeah, Very true. absolutely. Yes. Thank you, sir. I think there is no questions. So thank you very much, sir, for your sharing your thoughts and giving us telling us about the importance of time management of time and the positive attitude towards our career is important one to succeed in the life. So this word I would like to conclude this webinar with the vote of thanks. So it's a matter of pride for me. I am proposing a vote of thanks for this informative webinar. I, Dr. Mukesh Laichettivas, on behalf of College of Agriculture and entire community, first of all, my most sincere thanks to the gods, and I would like to thanks to the management trustee of the Parul University. Then I would also like to thank the chairman of the today's webinar, respected Dean and Principal Dr. Chandrakant Sharma sir, and for his enthusiastic support. And I want to thank to our today's speaker, Dr. Birendra Singh sir, who gave his vital time for his busiest schedule to grace this webinar. A special thanks to the teaching and non-teaching staff for their support and coordination, and a special and heartily thanks to our students for the active participation. With these words and kind message, we move toward the end of the today's webinar. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, Dr. Singh, for sparing the Thanks. time for igniting the young minds. Namaste. Thank you. Thank Thanks. you so much. Thanks.